Okay, students. So now exercise 5.3, question number 9, and what is given in the question? If the sum of first 7 terms of an AP is 49. देखिए क्या दिया हुआ है? What is given to us? Sum of first 7 terms of an AP means S7 is given to us. Sum लिखा हुआ है देखिए. Sum of first 7 terms मतलब it means what? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 equal to 49. So the, at place of A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 equals to 49, we will write S7 directly because S7 represent sum of first 7 terms. 49. Similarly, we have and that of 17th term. What is that of? Sum of first 17 term means S17. That is 289. Okay. Now find the sum of first n terms means we have to find Sn. Okay, so we can find Sn, but before that we need to find the value of n. जो n का value मिलेगा, we will substitute that value here and we will be getting the value of Sn. Okay, so सबसे पहले what is given? S7 is 49, so we will write S7. What is Sn? We will write the formula for Sn. Sn equals to what? N by 2, 2a plus n minus 1 d. Right? So at place of n we have 7, so we write S7. तो जहाँ पे भी n है वहाँ पर हमको 7 लिखना है, तो 7 by 2, 2a, n के प्लेस पे 7 minus 1 d. But what is the value of S7? S7 the value is 49. Okay, we will write 49. 7 by 2, 2a, 7 minus 1, 16. Okay. Now we can see that here 2 is common. We can take 2 out from the bracket. Okay. So we will take 2 out. यहाँ पे रह जाएगा a. Here it will be 3. 2 get cancelled. Now we have 7. A plus 3. Correct? 49. 49. Now 7 it is in multiple form. It will come and divide. 49 by 7. A plus 3. 7 7 is 49. So now we have a plus 3d equal to 7. Give it equation number 1. Right? Similarly, we will do for this. So we will write S17. We will write 17 by 2. Okay, यहाँ पर put करना है. Then in bracket we will write 2a plus 17 minus 1 d. Correct? 17 by 2. What is the value of S17? 289. So we will write 289. Okay. So 2a plus 16d. Okay. So again we can take 2 out. This is common in both. So 17 by 2 और 2 आपने बाहर ले लिया. So here we have a plus 8c. 2 get cancelled. So we have 17. Correct? In bracket we have a plus 8t and here we have 289. We know that 289 it is completely divisible by 17. 17 का square होता है 289. So 17 it is in multiple form with this. It will come and divide 289. 17. Okay. Now we have a plus 8d equal to 17. This is equation number 2. Again we have a simultaneous equation. Here we have a plus 3d equal to 7. Equation number 1 and a plus 8d equal to 17. Equation number 2. Again a we can see clearly. Okay. So we will eliminate a. Okay. How we can eliminate? By subtracting equation 1 from 2. Okay. First of all copy this much. Okay. There I will solve further. Okay. Okay, copy. Okay, now, so equation number 1 is a plus 3d equal to 7, a plus 8d equal to 17. And here we have to eliminate either d, या तो आपको d को eliminate करना है, या फिर a को eliminate करना है. So, we will eliminate a. So, we will subtract equation 1 from 2. 1 को 2 से subtract करना है, मतलब 2 को ऊपर लिखना है. Okay, so a plus 8d, 17, a plus 3d equal to 7. Subtract this. Okay. So a get cancelled. 8 minus 3 it will become 5d. 17 minus 7 10. So 5 it is in multiple form with d. So d equals to what? 10 by 5. 5 to the. Okay. Now we got d ka value as 2. Now we will put this d ka value 2 in any one equation.
So we will write put d equals to 2 in equation 1. Okay, for getting the value of a. So a plus 3d equal to 7 we have. So a plus 3 into what is the value of d is 2. So a plus 3 to the 6 equal to 7. So 6, it is in addition form, it will go on the right side, it will be subtracted. 1 equal to 1. Now we have a ka value 1, b ka value 2. Okay, so we need to find value of Sn, sum of first n terms. Sn is what? N by 2. Okay, so n by 2, a ka value is 1, n minus 1, and the difference is how much? 2. Since we don't know the value of n now, so we will directly find the value in terms of n. मतलब n की value unknown है, so we will find Sn as in the form of n only, because we have the values of a and d only. So n by 2, 2 plus, now open the bracket, 2 into n, 2n, 2 1 the minus 2, minus 2 plus 2 get cancelled. So here we have n by 2, in bracket we have 2n. Sn. Okay, now 2 get cancelled, so we have n ka square. So sum of n terms will be n ka square. Okay, students, copy. Okay, now again we have a formula. Okay, what is the formula? If we have given sum of n terms, so with the help of sum of n terms, how can we find nth term? Means Sn के help से how can we find Tn? Okay, so suppose one example we have. Suppose I am writing 2, 4, 6, 8 are in AP. Okay, the sequence it is in AP. Okay, so if I say you A1, आप बोलोगे 2, so that is again S1 है, क्योंकि sum of first term that is A1 only, S1 equal to A1. Okay, if I will say you S2, sum of first two terms, तो आप लिखोगे A1 plus A2, A1 plus A2. But अगर मैं आपसे बोलूँ subtract S2 minus S1, S2 minus S1, it means you are subtracting this into this minus this one. So A1 plus A2, A1. Now open the bracket, A1 plus A2 minus A1, A1 get cancel A2. So we have S2 minus S1 equal to A2. ठीक है, अब पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. Here sum of first two terms, इन दोनों को लिया, this plus this. Okay, माइनस क्या करना है? Sum of first terms, इसको कट कर देना है. क्या बचेगा? 4. 4 is what? Okay. Similarly, suppose we have a sequence of 3, 6, 9, 12, 15, 18, and so on. If I will write S5 minus S4, okay, S5 क्या होगा? S5 means what? Sum of first, second, third, fourth, and fifth. We have 2 and all. Minus क्या करना है? Sum of 4 terms. 1, 2, 3, 4. तो क्या बचेगा? ये 5. Correct? समझा? Because sum of 5 terms will be what? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 minus S4 will be what? A1 plus A2 plus A3 plus A4. Okay. Now we will see what will be the result. So now open the bracket, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Now minus. So everywhere we have positive sign, it will become negative sign. Minus A1, minus A2, minus A3, minus A4, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4 get cancel. क्या बच रहा है? A5. ठीक. So एक और टिप है, whenever we are writing Sn, Sn minus Sn minus 1. ठीक. This is Tn, sorry, not Sn. ठीक है. ठीक. Tn equals to Sn minus Sn minus 1. Sn minus 1 मतलब एक का. Suppose S2, S1, तो बचेगा क्या? A2. सेकेंड टर्म मिलेगा. Because sum of first two terms 1, 2. A1 plus A2 लिखा, माइनस क्या करना फर्स्ट टर्म? A1 गेट कैंसिल, बचेगा क्या? A2. So this is one formula. Tn मतलब कभी भी अगर आपको एट टर्म फाइंड करना है, with the help of Sn,
Tn फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ Sn. Sn फाइंड करना है तो यू लेट S8 minus S7. सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, पहले के 8 टर्म्स को ऐड करना है माइनस सम ऑफ 7 टर्म्स, उसमें से पहले के 7 टर्म्स को सबट्रैक्ट कर देना है, तो यू विल गेटिंग 8th टर्म. ओके, कॉपी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ओके, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बट सिंपल है, समझना है आपको. इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज गिवन, पहले लाइन टू लाइन हम लोग समझते हैं. इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म्स होगा, फर्स्ट n टर्म्स. ओके, if the sum of first n terms of an AP is this, means Sn is given to us 4n minus n का square. Sn is given to us, okay, so Sn is what, 4n minus n का square. फिर क्या पूछा है, what is the first term, means आपको पूछा है A1 क्या होगा, A1 means S1 ना. What is the sum of first two terms, फिर S2 पूछा है क्या होगा. What is the second term, A2 क्या होगा. Similarly third, 10th and nth term, third term क्या होगा, 10th term क्या होगा और nth term क्या होगा. ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन है. ठीक, अप्लाई करो पॉज करके, हेल्प. ओके, मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक, देखो, so sum, we have sum of first n terms of an AP is this. Sn is given to us. देखो, if we are substituting 1 at place of n, तो यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, so we will be getting S1 when n equal to 1. so S1 क्या हो जाएगा, 4 1 1 का स्क्वायर, 4 1 का 4, 1 का स्क्वायर 1 3. with the help of Sn you have found out S1. ठीक, with the help of Sn you have found out S1. S1 तो A1 है. Sum of first term is what, A. A मतलब A1, which is 3. A1 मिल चुका आपको. ठीक है. Then we have to find S2, sum of first two terms. तो sum of first two terms find करने के लिए S2 क्या होता है, A1 plus A2. Sum of first two terms is what, A1 plus A2. Okay, already we have A1. But we don't know A2. If we are finding A2, we are substituting a value of A2 here, so then we will be getting S2. Okay, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और देखो फॉर्मूला, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही, देखो यहाँ पर देख लो ऊपर, Tn इक्वल टू Sn माइनस ये फॉर्मूला क्या होता है, Tn जो भी होगा, सपोज वी नीड थर्ड टर्म, we will let sum of third term, sum of first three terms minus sum of first two term. जो T3 होता है वही S3 होता है और उससे एक कम S2 होता है, ये लिखना होता है. जब आपको nth term चाहिए होता है with the help of sum of nth term, okay, then you always use this formula. क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ, sum of n terms दिया हुआ है, with the help of sum of n terms we need to find nth term. यहाँ पे लिखा हुआ है sum of n terms, with the help of sum of n terms we are finding nth terms. Okay, now A1 is clear. Okay, so now again we need to find A2, S2, A3, A10, A8. Okay, now Sn is this again when n का वैल्यू 2, n के प्लेस पे 2 लिखोगे तो आपको S2 मिल रहा है. Okay, so S2, so 4 2 minus 2 का स्क्वायर, 8 minus 4 4. S2 is 4. Okay, S2 is 4. आपका S2 मिला. Simply we know that T2 will be what? Sorry, A2 will be what? T2 भी है, लिख सकते हैं term 2 और A2 is the term 2. A2 will be what? S2 minus S1. फॉर्मूला चेक करो. 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, इससे एक कम होगा. 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, इससे वो एक कम होगा. S2 is what? 4. S1 is what? 3. So second term is 1. See? Second term is 1. Then we need to find A3. तो A3 के लिए क्या करना होगा, S3 minus S1.
S3 के लिए क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 3 हियर. So again when n is 3, so S3 will be 4 into 3, 3 का square, 4 3 is 12, 3. S3 is again 3. Okay, so A3 is what? S3 minus S2. So S3 क्या है 3 है और S2 क्या है 4 है. So 3 minus 4 is minus. Right? We got A3. Now for A10. So A10 चाहिए आपको. If we need A10, so S10 minus S9. When we need A10, T10, T10 we have written. T10 की जगह पे हम लोग A लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक. n का टर्म है वहां पर. Tn भी लिख सकते हैं, En भी लिख सकते हैं. ओके, When we need An, n का टर्म, T भी होता है n का टर्म के लिए. ओके, A भी होता है n का टर्म के लिए. दोनों we can use. ओके, so An equal to Sn minus 1 इसे एक टर्म. Suppose मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो sum of first 3 terms minus sum of first 2 terms. ओके, so देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला है यहाँ पर. ओके, so again we need A10. When we need A10, so फॉर्मूला क्या होना चाहिए, S10 minus S9. अभी S10 S9 कहाँ पर है, so we will substitute 10 here in this equation, so we will be getting S10, and when we are substituting 9 here, then again we are getting S9. तो आपको यहाँ पे substitute करना है और directly you can find the value of A10. Okay, करके देख लेते हैं एक बार हम लोग. तो S10 करना है, तो here we will put 4 into 10 और यहाँ पे लिखना है 10 का स्क्वायर. 4 10 का 40 minus 100, that is minus 60. S10 आपको मिल गया minus 60. Now we need S9, तो यहाँ पे अगेन पुट करना है S9. 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर. 4 9 is 36 minus 81. Okay, so minus 45. Minus 45. So we need A10. So A10 आपने लिखा फॉर्मूला S10 minus S9. S10 क्या है आपका minus 60 minus, and this is itself minus. Minus minus plus minus 60 plus 45. This will become minus 15. So 10th term is minus 15. Now for An. An क्या होगा? An is Sn minus Sn minus 1. ठीक है, कॉपी कर लीजिए, पॉज कर रहा. Okay, now we need to find An. n टर्म फाइंड करना है, तो An के लिए क्या होना चाहिए, Sn minus 1. ठीक है, सो ऑलरेडी वी हैव Sn और जहां पे भी Sn है उसमें minus 1 करना है. सो Sn ऑलरेडी वी हैव Sn का वैल्यू इज दिस, so Sn minus 1 फाइंड करना है. ओके, फॉर दिस, so wherever we have n, we will write n minus 1. तो यहाँ पे मैंने n minus 1 लिखा, ये 4 है, n के प्लेस पे we will write n minus 1 minus n के प्लेस पे again we will write n minus 1 का स्क्वायर. Now open the bracket, 4 into n, 4 1 जा 4. ओके, माइनस इज आउटसाइड. ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अंदर. a minus b the whole square. a minus b the whole square क्या होता है, a का स्क्वायर minus 2 into a into b means 2n plus 1 का स्क्वायर. Now we have 4n minus 4 minus, open the bracket, minus n square minus plus 2n minus 1. So 4n plus 2n is 6n minus n square minus 4 minus 1 minus 5. So this is Sn minus 1. Okay, now we need to find An. So we will write Sn minus 1. तो Sn अपनी क्या वैल्यू है, देखो वहां पर 4n minus n का स्क्वायर minus what is Sn minus 1. So 6n minus n square minus 5. Now open the bracket, 4n minus n square, this will become minus plus 5. Right? So plus n square minus n square get cancelled. 4n minus 6n is minus 2n. Okay, plus 5. So 4n minus 6n is minus 2n, and what has remained, plus 5. So nth value is minus 2n plus 5. Okay, copy it.